Okay, so now I will start this class. For a few candidates have not joined. I am saying again and again, please join in time so that the class starts in time. Otherwise, what will happen? That others are waiting and then they will get frustrated. So I don't want others to waste their time also. Everybody's time is precious. And so is mine also, yes. Okay, so today, as I said, we will be discussing about how to fill your PIQ form. I will be sending you a PIQ form if somebody has not got it. Otherwise, it is available again on the Google site. But now I have joined your group. So I will be sending on the group. Whoever doesn't have, they can download it and then fill it up also. Okay, now understand, whenever you go for a job, you are supposed to provide some data about yourself, about what all you have done in life, specifically which is related to whatever is related to that particular job. Now, in simple terms, that is called a CV or curriculum vitae. However, as far as the SSB is concerned, you are required to fill up a form called the Personal Information Questionnaire, in short, called the PIQ. Now, what's the difference between the CV and the PIQ? It is this, that in CV, there is no format which is available. कोई दिया नहीं है कि इस प्रकार से लिखो या उस प्रकार से लिखो. Yes, there are certain samples which are available on the Google search. However, there is not sacrosanct. आपका जो मन आए, आप जो समझते हो, what is the job requirement and the job description. Accordingly, you design your CV and fill up the details and submit. However, in the armed forces, as when you go for SSB, and after you have cleared the stage 1, you will be required to submit your PIQ, which is a standard form, and the format is laid down. So that's why you are being given printed form. You cannot add additional information other than what has been asked for. Yeah, during the course of interview, you will be asked one question: is there anything else which you would like to tell about yourself? So then you will get a chance. But in the PIQ form, there is no place for some additional information like that. So therefore, you are not also supposed to furnish any additional information other than what has been asked. Now, since it is a printed form and a standard format, so all children, first of all, have a even bar. Number one, number two, irrespective of when they go, whether they go for SSB to Varanasi or Allahabad or Bangalore or you go to Bhopal, it does not matter. It does not matter because you will be filling up your same CIQ and PIQ and same amount of data you will be submitting about yourself, based on which you will be assessed by the interviewing officer as also the psychologist. Okay, so having seen this, now understand this, that in the PIQ there are so many details which are asked. As far as the interview is concerned, this PIQ becomes the basis of the interview to the extent of almost 50%. And therefore, it is very important that whatever information you furnish in this PIQ form, it should be to the point. ना ज्यादा ना कम. आप कम लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको जो opportunities मिली हैं, you have not availed of each and every opportunities, specifically to those headings which I'm going to discuss right now and whatever forms part of the PIQ. अगर आप बहुत ज्यादा लिखोगे तो invariably what will happen, especially during the interview, since it's a timed interview, so therefore the interviewing officer may not be able to ask each and everything. और आप वो बच्चे हो जिसने हर एक चीज में पार्ट लिया है, तो अगर वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हर एक चीज के ऊपर बात करना शुरू करेगा तो उसका टाइम तो खत्म हो जाएगा कहीं बीच में भी, और जो सारे CIQs है जो मैं कल बता रहा था थोड़ा तो वो सब पूछ नहीं पाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा. अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो he will not be able to give you optimum marks, and perhaps even if you clear it, you may not be in the merit. So therefore, it is very important that you filter out certain things which are important, which you are sure that you will be able to impress the assessor. Especially when you have done too many things, then certainly you should filter out 1, 2, 3, 4, these 4 activities in extracurricular activities or games. I will write balance. I will just say besides I've done many other activities. That's it. So then, perforce all those important things which you feel they are important, they will be discussed during the course of interview. अदरवाइज वो एक एक लाइन आपको बोलने का मौका देंगे और एक एक में तो आप क्या समझा पाओगे, कुछ भी नहीं समझा पाओगे. जो भी आपने अचीवमेंट करी है, कितनी मेहनत करी है और किस प्रकार से वो अचीवमेंट करी है अपने हित के लिए, और वो पूरा ठीक से समझ में नहीं आएगा अगर, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलना है पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा. So this is where I will be focusing when I will be discussing the PIQ form. Now, having seen all of this, now understand that through the medium of this PIQ, you will be telling about how you perform in your studies, what is your family strength, and what all they have done. You will be able to tell about what all extracurricular activities you have participated. You will be able to tell about all the sports and games which you have played, your hobbies which you pursue, about if you have taken part in NCC, then the details about it, and also about the various positions of responsibility which you have held during the school time, starting from your 8th onwards. So all this information will be put in the PIQ form. अब वो किस प्रकार से कहाँ पे भरा जाएगा, क्या क्या भरा जाएगा, अब वो हमने आपको PIQ के तहत में समझाना है. Now, at the same time, let me tell you that do not fill some some small things. आपने करी तो होंगी, लेकिन उसका impression क्या पड़ेगा assessor के ऊपर. If it will be hardly any as per your perception also, then why should you fill it up? It's a waste of time. So आप वो अपने मन में रखो, बाद में बताना कि मैंने ये भी किया. When the question is being asked, is there anything else you would like to say? Then you can tell. Okay, provided you are very confident कि बाकी जो बताया वो तो impressive था, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो और भी impress कर देगा. So like that, what you should be able to filter in your mind before speaking. अब यहाँ पे ये tactfulness वाली बात आ जाती है, maturity वाली बात आ जाती है. किस चीज को हम रखें फॉर्म के अंदर और किस चीज को नहीं रखना है. At the same time, be truthful and do not try to फट्टा नहीं मारना कि मैंने ये भी किया, वह भी किया. एक्चुअली मैंने नहीं किया, क्योंकि किसी ने आपको बता दिया कि ये अपने अगर सारी एक्टिविटीज नहीं करी है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, और फिर आप लिख देते हो एक्चुअली मैंने नहीं किया है. Then what will happen if during the cross questioning or inquiring time anywhere it comes out that what you are telling is not the truth, वो तो मतलब आप समझ लो कि आपका thumbs down हो गया immediately. No second chance will be given to you. एसएसएल आपको कुछ बोलेगा नहीं कि वो पास कर रहा फेल कर रहा है, बस उसने अपना जो कागज में लिखना है वो लिख देगा और वहीं आपका फेट जो है समाप्त हो जाएगा इन द नेगेटिव सेंस. सो देयरफॉर अंडरस्टैंड दिस दैट नोवेयर इवन व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग एनीवेयर यू शुड बी टेलिंग लाइज. वो निकल गया ठीक है, बट अगर आप पकड़े गए तो उसका कोई फिर जवाब नहीं है, ना तोड़ है, फिर आप वापस घर तो आने आना है. ओके, नाउ कमिंग टू द PIQ पर से, अभी मैंने जो अभी तक बोला सबको समझ में आ गई बात? एनी क्वेश्चन सो फार बिफोर आई स्टार्ट विद द PIQ फॉर्म? ओके, गुड, ग्रेट. अब मैं PIQ फॉर्म को शुरू करूंगा. इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले जो पैराग्राफ वाइज में चलूंगा और सीरियल नंबर 1
टू सीरियल नंबर 13। ओके, तो 13 पैराज हैं उसके अंदर आपको ब्लैंक फॉर्म, मतलब फॉर्म के अंदर टेबल्स बने हुए हैं। टेबल के जहां टेबल बने हुए हैं वहां टेबल पे लिखना है, जहां डॉटेड लाइंस है तो डॉटेड लाइंस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो एट सीरियल नंबर 1 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द नंबर एंड प्लेस ऑफ द एसएसबी। नाउ प्लेस ऑफ द एसएसबी तो आपको पता है बिकॉज़ दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू रिपोर्ट, बट द नंबर ऑफ एसएसबी यू आर गोइंग टू अटेंड यू विल कम टू नो आफ्टर रीचिंग द एसएसबी सेंटर। ओके, जैसे कि इलाहाबाद सेंटर आ गया। ओके, तो इलाहाबाद तो जगह तो पता चल गई, लेकिन ये इलाहाबाद में 5 एसएसबीज हैं, तो कौन से वाले में आप जा रहे हो वो वहीं पहुंच के पता चलेगा। उसके बाद चेस्ट नंबर, वंस यू रीच इन व्हिच सीरियल ऑर्डर यू आर रीचिंग द गेट ऑफ द एसएसबी, देन यू विल बी allotted a chest number and you will be given a chest number to wear on yourself. And also you'll be allocated a badge number. Now this badge number is for your whole batch. That whoever is reporting on that particular day to your SSB, they will be forming part of the batch. Okay, अभी ये पूरा जो बैच बन जाएगा, whether 70 or 80 or 90 कैंडिडेट्स का, so that will be the batch that will be belonging for the and ready for the stage 1. Okay, so ये जो चेस्ट नंबर्स अभी मिल रहे हैं वो है सिर्फ स्टेज 1 के लिए। Okay, now तो नंबर फिर आपका प्लेस आपको बता दिया वो मिल जाएगा, और फिर एसएसबी नंबर एंड द बैच नंबर विल बी allotted to there. And what is the UPSC roll number? Now all of you have to also carry your UPSC roll number, that is the written test में जो आपने नंबर लिखा था वो भी आपको रोल नंबर वहां पे फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। At serial number 2 you have to write your name in capital letters. So this name of yours do not start writing, गलती से कि मैं रंग में लिख दिया और फिर काट-पीट बता रहा हूं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पीआईक्यू फॉर्म को जितनी नीट हैंडराइटिंग में और क्लियर कट जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वैसे ही लिखना है। गंदी तरीके से या काटा-पीटी करके नहीं कराना है, बिकॉज़ दिस फॉर्म इज गोइंग टू 2 एसएसएस। वो दोनों सोचेंगे कि ये बच्चा है, ही और शी इज नॉट सीरियस, और ये चलती का नाम गाड़ी वाला इसका एटीट्यूड है। Okay, so the moment you start filling your form in a very gandi सी handwriting, so then the first impression you are losing out. So understand this. Okay, now so वो ensure करना है कि जो आप अपना नाम की spelling लिख रहे हो, it is same as what you filled up in the entrance form, as also similar to what it is there in your 10th class certificate, because that is the proof of the all age, और आपका नाम, पिता का नाम, सब कुछ वहीं से निकलता है। Now serial number 3, paragraph number 3 is about your name of your father. Again, this should be similar to what is there mentioned in the 10th class mark sheet. As serial number 4 there are 3 sub serials A, B, C. Place of maximum stay, प्लेस ऑफ प्रेजेंट स्टे जहां से अभी आप आ रहे हो एसएसबी के लिए, एंड प्लेस ऑफ परमानेंट स्टे। परमानेंट मतलब कि जहां पे आपके माता पिता पिताजी जो है बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ प्लेस ऑफ मैक्सिमम स्टे बिकॉज़ ऑफ फादर्स सर्विस, सो यू आर स्टेइंग समवेयर एल्स। ओके, प्रेजेंट स्टे इज फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फॉर द एसएसबी, मे बी यू आर इन द बोर्डिंग और समथिंग, सो लाइक दैट, और यू आर स्टेइंग, you belong to a village but you are staying with some of your relative in a town, so you talk about that. And the third is about the permanent, that is wherever your father belongs to. Now all these 3 places can be different, any 2 can be same or all 3 can be same. ओके, कोई सैक्रोसेंट नहीं है सभी के लिए कि एक सा हो, सबके लिए तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं, बट चाहे वो सेम है या अलग अलग है, आपको उन जगहों का किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, और वहां की पॉपुलेशन क्या है ये पता होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन इन नंबर ऑफ लैक्स। ओके, सो लाइक दैट यू आल्सो हैव टू मेंशन इन द प्लेस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। नाउ अब ये जो 3 जगह हैं मैं अभी से बता दे रहा हूं, कुछ चीजें अभी से बताता जाऊंगा कि जो आपने प्रिपेयर करना है। इन 3 जगहों, चाहे एक है तो वेरी गुड, अगर तीनों अलग अलग हैं तो तीनों जगहों के लिए आपको उनके बारे में क्या पता होना चाहिए। पहला, ये जो नोट करना चाहे वो नोट कर सकता है, ठीक है। पहला है कि उस जगह का नाम जो है वो क्यों पड़ा। नंबर 2, वहां पे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या क्या है। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपकी प्लेस जहां बिलोंग करते हो वो ऐसी है जैसे आगरा है या दिल्ली है, वहां तो बहुत सारी हैं टूरिस्ट जगह, क्या सबके बारे में बताना चाहोगे? तो ऑब्वियसली नॉट। सो देयरफॉर यू शुड फिल्टर आउट जस्ट अबाउट 3 टूरिस्ट प्लेस और 4 टूरिस्ट प्लेस व्हिच आर ऑफ वेरी वेरी रेलेवेंस एंड नेम देम एंड जस्ट ऐड अनदर लाइन दैट बिसाइड्स मेनी अदर प्लेसेस। तो जवाब आपका किस प्रकार से आप देते हो वो आपका मैच्योरिटी लेवल और आपका थिंकिंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो दर्शाता है। तो देयरफॉर डोंट स्टार्ट रटलिंग आउट एवरीथिंग एज इफ द होल डे इज अवेलेबल टू यू, ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज, वहां पे अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है या हो गया है। हर जगह कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं कुछ रोडें बन रही हैं, कहीं वहां से हाईवे कनेक्ट हो रहा है, कहीं पे वहां पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल सेटअप हो रही हैं, तो इस प्रकार से। नंबर 4, हर एक शहर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जो आप चाहते हो कि आपके शहर में या गांव में जहां पे आप बिलोंग करते हो वो उसमें सुधार हो। तो आपकी समझ में क्या क्या और सुधार होने चाहिए। तो ये 4 चीज थोड़ी प्रिपेयर करके रखोगे वो काम आएंगी, मैं बताऊंगा कहां पे काम आएंगी। नाउ सीरियल नंबर, पैराग्राफ नंबर 5, देयर आर सर्टेन डेटा व्हिच इज आस्क्ड व्हिच इज फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस फॉर द गवर्नमेंट। It has got nothing to do with your assessment anything, but it is to do with your government statistical records, which will include that place where you belong to, district which you belong to, which is your caste, including SC, ST, OBC, and like that, and what is your mother tongue, then religion also. So like that, all such details will be asked. We have got nothing to do. No question will be asked as far as the assessment is concerned, but it is all for the government. This also includes whether you are single, married, or widower. Okay, so like that. Now, अभी ये पहला 5 शुरू खत्म हो गया। अब 6th. Now 6th is related to your family details. अब 6th के अंदर there are 3 sub serials. What are these sub serials? पहले 2 A और B में एक तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आर योर पेरेंट्स अलाइव और नॉट, तो यस और नो में आ जाएगा। और सीरियल नंबर 6 बी के अंदर पूछा जाएगा इफ नॉट देन एट व्हाट एज डिड यू लूज देम। नाउ ये जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर दोस चिल्ड्रन, अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन हु मे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, आइदर वन और बोथ। अब वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कोई भी जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को लूज करता है और वो होश हवास में है, सो इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स माइंड। ओके, तो जब वो असेसमेंट में आएगा खास तौर से साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो वो देखेगा कि उसका प्रभाव अभी उस बच्चे में, उसका जो शॉक लगता है वो अभी भी शॉक लगा हुआ है या वो खत्म हो गया है।
ये क्यों पूछते हैं? इसलिए सिर्फ कि आप लीडर ऑफ मेन बनने जा रहे हो और जिनको कि आप लड़ाई में उनके साथ जाओगे। तो अगर आप ऑलरेडी शॉक में से उभर के नहीं आए हो तो आपकी खुद की मानसिक अवस्था जो है वो सही नहीं रहेगी। सो इन दैट स्टेट व्हेन द टेंशन एंड द स्ट्रेस लेवल इज वेरी हाई, यू मे टेंड टू गिव अप। सो एज सच इन दैट स्टेट, बट अगर आप उभर के आ गए हो उस अवस्था से और अभी नॉर्मल बच्चे बन गए हो, कंटिन्यू एंड यू आर फिट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। पैरा नंबर 6 सी में एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में कॉलम्स बने हुए हैं जिसमें कि आपसे पूछा जाता है आपके पेरेंट्स दैट इज मदर एंड फादर एंड योर सिबलिंग्स बोथ एल्डर एंड यंगर के एजुकेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में और इनकम के बारे में। अब ये तीन चीजें पूछी जा रही हैं। इसका महत्व क्या है ये भी जान लो कि जो एजुकेशन यानी कि आपकी जो एजुकेशन पढ़ रहे हो, वेदर यू हैव टेकन साइंस और आर्ट्स, इज इट सेम और कॉमन विद सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, या सारे के सारे आपके फैमिली में तो आर्ट्स वाले हैं और आप साइंस वाले ले रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों भाई ऐसा क्यों, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्यूपेशन में क्या जब आप यहाँ पे आ गए हो तो यू आर वांटिंग टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, क्या आपकी फैमिली में कोई और पहले से है क्या आर्म फोर्सेस में कि यू आर द फर्स्ट वन? ओके, सो अगेन दैट क्वेश्चन विल कम समवेयर दैट ओके सो व्हाई यू नॉट फॉलोइंग योर फादर्स फुटस्टेप और योर ब्रदर्स फुटस्टेप और व्हाटएवर। ओके, सो उस प्रकार के क्वेश्चन बनने के आप रेडी होना पड़ेगा आपको। एंड द थर्ड कॉलम इज इनकम। नाउ फ्रॉम द इनकम डिपेंडिंग ऑन विच प्लेस यू आर स्टेइंग, कि आप एक गांव में रह रहे हो जहाँ पढ़ाई करी आपने, या एक छोटे से टाउन में रह रहे हो, या मीडियम साइज टाउन और मेट्रो, तो हर एक जगह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा तो होगा। वाजिब बात है कि गांव के अंदर सबसे कम पैसा खर्चा होता है और मेट्रो में ज्यादा पैसा होता है। तो जिस हिसाब से आपने इनकम अपनी फैमिली की दिखा रखी है, परिवार वालों की, मदर फादर एंड योर सिबलिंग्स, इफ आफ्टर टोटलिंग इट द फैमिली इनकम इज नॉट सफिशिएंट इनफ एज पर अस, एज पर आवर परसेप्शन, नॉट सफिशिएंट टू हैव गिवन यू अ लीवे टू स्टडी इन अ बेटर स्कूल, यानी आप पढ़ना चाहते थे कॉन्वेंट में, इंग्लिश स्कूल में, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, इट्स ऑप्शनल क्वेश्चन कि क्या आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुई अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी फिल्ड बाय यू। अब वो इसमें छोटी-छोटी गलतियां नहीं करना है कि अगेन इनकम पर मंथ लिखा है तो डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एनुअल इनकम। अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली किसी महीने में ज्यादा किसी महीने में कम इनकम होती है, तो क्या करना है, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जितनी कमाई हुई है उसका एवरेज निकाल लो एंड जस्ट राइट दैट और आगे लिख दो अप्रॉक्सीमेटली। अभी नाउ वी कम टू पैरा नंबर 7। नाउ पैरा नंबर 7 इज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल रिकॉर्ड। इस एजुकेशनल रिकॉर्ड के अंदर अगेन एक टेबल बना हुआ है, उसमें भरना है। नाउ ऑब्वियसली देयर आर मेनी कॉलम्स आउट हियर एंड वो पतले-पतले से हैं। तो अगर वो पतले-पतले से हैं, सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो आप तो मैं बता रहा हूं कि वहां पे आपने एब्रिविएशन लिखना है, एस्टेरिस्क मार्क करके, और नीचे फुल फॉर्म लिखना है। अब ये कॉलम क्या-क्या है? पहली बात तो इस टेबल के अंदर आपसे जो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 10th। अभी जो मैं ये बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है? वो 10 से शुरू है। उसके अंदर फिर आ जाएगा विच स्कूल, विच बोर्ड, बोर्ड यानी कि आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, okay, and the language, the medium of instructions, Hindi, English या mother tongue, okay, and last is about your achievements if any, whether you were a subject topper or a class topper, okay, so like that has to be filled up। now अभी मैंने बताया आपको, आप क्योंकि अभी एनडी के लिए अपियर कर रहे हो तो आप मैक्सिमम आप लोगों ने 10th और 12th किया है, या आप 12th में पढ़ रहे हो या अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए, एनडी वाले इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड विल बी आस्क्ड फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स। तो क्लास 8th, 9th, 10th, 11th में अगेन जगह नहीं है टेबल के अंदर, बट 11th का पता होना चाहिए कितना मार्क्स स्कोर किया आपने, और फिर अगर 12th कराया तो 12th के बारे में। If you have already passed the first semester or second semester of the graduation, then you are supposed to fill that up also. Now, when I am saying about this 8th, 9th and 11th, which is not there in the table, you are not, there's no place for writing. You don't have to write it in the paper form, but you have to remember it in your mind. उस समय जब इंटरव्यू के दौरान जब पूछा जाएगा तो उस समय नहीं बोलना सर आई डोंट रिमेंबर सर। अब ये बहुत अच्छे करते हैं जो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आई डोंट रिमेंबर, तो वही उनके लिए मार्क हो जाता है कि ये बच्चा ने खुद तो पास किया टेस्ट और वो भी जल्दी जल्दी भूल गया, अभी 2-4 साल में ही भूल गया। तो जो चीज आर्म फोर्स में ऐसा लिया जाता है कि व्हेन यू बिकम लीडर ऑफ मैन, एक बार जो सिखा दी तो उसको भूलना नहीं है, जिंदगी भर के लिए याद रखना है, या अगर भूलते हो तो अपने आप ही खुद रिवाइज कर लो। तो इसी तरह जब आप अभी इंटरव्यू के लिए आओगे, एसएसबी के लिए जाओगे, तो बेटर लुक एट योर क्लास 8th, 9th एंड 11th रिपोर्ट कार्ड, एंड इफ यू हैव थ्रोन जस्ट टू बैड, देन यू ट्राई टू रिमेंबर कितना कितना स्कोर किया, या अपने मम्मी पापा से पूछो तो उसको याद होगा। ओके, नाउ देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल इन द इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपका एजुकेशन रिकॉर्ड बताओ, और इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में आपको जब मैं आऊंगा वहां पर इंटरव्यू के तहत तो वहां पे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सावधान कर दिया है कि कहीं पे भी ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, ठीक है। ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, एक सवाल आता है इंटरव्यू के अंदर कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब ये फेवरेट सब्जेक्ट जो है क्लास वाइज नहीं है कि 8th में क्या था, 10th में क्या था, 12th में क्या था, ऐसा नहीं है। ओवरऑल विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, वेदर इट वाज इन 10th और वेदर इट वाज इन 12th। तो मैं आपको बता रहा हूं अभी से, मिनिमम 2 चैप्टर्स फ्रॉम दैट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ योर्स यू मस्ट रिवाइज टू आंसर एनी क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड। ओके, काम में आएगा, बताऊंगा मैं कहां पे। सिमिलरली ऑल द एक्टिविटीज व्हिच यू हैव डन एंड व्हिच यू आर गोइंग टू राइट, आगे अभी बताऊंगा, तो उसके बारे में भी पता करना है। दिस आई विल बी टेलिंग यू अ लिटिल व्हाइल लेटर। अभी पैरा नंबर 7 हो गया। पैरा नंबर 8 एंड 9 आर अबाउट यू। 8 इज रिलेटेड टू योर फिजिकल attributes, that is your age, height and weight. So age, height and weight, that is age in years, weight in kgs and height in meters. So these three put together are help the assessor to assess your BMI, body mass index. कि आप इन वेट हो, ओवर वेट हो, बहुत फास्ट फूड खाते हो और कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, सब यहाँ से पता चल जाता है बिना आपकी फोटो देखे, ठीक है। At para number 9 you are required to write your occupation and your income. Now obviously if you are still continuing to be a student, तो वहाँ पे आप स्टूडेंट लिखोगे, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और जहाँ पे इनकम की बात आती है, even if you are giving
tuition, part-time tuition to some children, and you are earning even 500 rupees, 1000 rupees, or 5000 rupees, mention it. Bracket में लिखना है part-time tuition. Okay, इसका बहुत महत्व है और आपके फेवर में जाएगा कि you are become responsible and you are able to cater for your pocket money and not dependent on your parents. अब हमारा 9th हो गया, अभी पैरा नंबर 10. Now पैरा नंबर 10 is related to your NCC participation. Anybody who has participated in NCC? Just raise your hand once and put it down. Yeah, good, very good. So NCC के अंदर जो है, अब which service, that is Air Force, Navy और Army. Then how many years that is you have taken part and which all certificates have you obtained. अब जो भी आपने एक्टिविटी करी है, अगर वो जो कोविड ईयर से डजंट मैटर, कोविड ईयर में आपने कोई एक्टिविटी हुई नहीं ज्यादा, लेकिन छोटी छोटी भी एक्टिविटी करी है, खास तौर से इफ यू हैव attained A certificate or B certificate, then be aware of the theoretical knowledge which you have gained in the NCC. अब उसके लिए क्लास लगना जरूरी नहीं है, आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया था, उसके तहत आपने तैयारी करी और A और B सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया. Whereas A certificate is more of practical aspects and B is a written paper. Now also if you have carried out firing or any other, you have attended some camp, whether it is annual training camp or combined annual training camp or attachment camp with some army unit or RD camp, कोई भी आपने अगर अटेंड किया है तो उसके बारे में आपने जानकारी अपने पास रखनी है, वक्त आने पर पूछने पर बताना है. खास तौर से some major activity where you were made responsible for a thing. अब वो responsibility for discipline, for auto guard, for march pass, for any particular demonstration. Okay, तो ऐसे करके जो भी है आपने पता करना है और आपने उसके तहत क्या क्या किया. अभी उस समय याद नहीं करने लगा सर एक्चुअली सर ऐसे करके नहीं बोलना, ठीक है ना. इसीलिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये सब तैयारी करनी है, जो भूल गए हो उसको अपना याददाश्त करके रात में उसको फोकस करके एक डायरी में लिखना है सब. Okay, including who was which battalion was your NCC responsible for your training, number 1, number 2 who was the CO of the NCC battalion, number 3 who were the other instructors or ANO who were responsible for you. So like that छोटी छोटी चीजें हैं बताना चाहिए. एनसीसी के तहत जो जो आपने चीजें करी है, कैंप में गए तो किसी टेंट के अंदर सोए होगे तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या था, अगर आपने फायरिंग करी है तो कौन सी गन से फायरिंग करी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेंथ कितनी है, उसमें कितने लंबी तक मार जाती है, हाउ मेनी बुलेट्स आर देयर इन द मैगजीन, व्हाट इज द कैलिबर ऑफ द गन. सो ऐसे करके छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपने पता करनी है और नोट कर लेनी है, बिकॉज एकदम से याद नहीं आएगा. अभी भी भूल गए हो तो टाइम है, यू कैन गो टू नॉट ओनली टू योर एनसीसी बटालियन बट टू एनी एनसीसी बटालियन एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स. अभी हो गया 10th. नाउ वी कम टू पैरा नंबर 11. पैरा नंबर 11 में देयर आर 4 सब पैरास A B C D. ओके, पैरा नंबर 11A के अंदर जो है आपकी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का लिखा हुआ है. स्पोर्ट्स में देयर आर 3 बेसिकली कॉलम्स, दैट इज व्हिच पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, सॉरी नॉट 3 but 4 कॉलम्स. ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन. नाउ ये जो ड्यूरेशन पूछा जाता है, यू डू नॉट स्टार्ट राइटिंग 1 day 3 days 5 days, बिकॉज़ एक दिन 5 दिन में कोई खेल सीख भी नहीं पाता है. So therefore you must send a correct message to the assessor that you should write which particular year you have participated. Then at what level. Okay, so whether school level, college level, university level, or you come down to the lower other levels like inter house, inter locality. Okay, you may be playing for a club, so inter club, or casually. That casual means that you are not taking part in any competition, but yes, you have been playing and you know the rules and regulations about that. And then comes the fourth column is about the achievements made. So if it is an individual game like athletics or swimming or judo or karate, then whether you are a winner or a runner-up like that. And if it is a team game, then up to what level did your team reach? Quarterfinals, semi-finals, finals, like that. Now, when you are talking about your sports and games, you should be very clear at what level you are talking about. You start saying, "Sir, I have taken part in national level." Okay. अरे कौन सा वाला national? Public school national या CBSE nationals या KB nationals और actually में जो open वाला nationals. Then age group national is also there. Okay. So you should clarify at the first instant. Don't leave it to कि मैं बोलूँगा वो impress हो जाएगा. मेरे जैसा बंदा कोई मिलेगा आपको तो पूछेगा जरूर, क्यों? क्योंकि मैंने खुद जूनियर नेशनल्स में और ओपन नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो पक्का पूछूंगा, क्योंकि जब आप इतने लेवल पे जाते हो तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तब तो पहुंच पाओगे, और नहीं तो नीचे लेवल पे रह जाओगे. सो दिस यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाटएवर स्पोर्ट्स यू आर पुटिंग देयर. ओके, आपको उस हर एक गेम का रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए एंड आल्सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लेइंग फील्ड इफ एप्लीकेबल. ये ना बोलो कि आप खेलते हो फुटबॉल, इवन इफ यू आर राइटिंग कैजुअली, देन यू आर आस्क्ड व्हाट इज द साइज ऑफ द गोल पोस्ट, फिर आप सोचते हो सर आई डोंट नो, या उल्टा गलती सलती बता देते हो. तो अगर आपको रूल्स या साइज ऑफ द फील्ड नहीं पता है और कैजुअली भी खेल रहे हो, यानी आप वो कैजुअली भी नहीं खेल रहे हो, आप सिर्फ मजाक के लिए खेल रहे हो, मतलब मस्ती के लिए, बिकॉज एनी गेम प्लेड विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नो गेम. सिंपल, ठीक है. पैरा नंबर 11B is about your hobbies and interest. So आपकी क्या क्या हॉबीज हैं और क्या इंटरेस्ट हैं, that you have to just name them and nothing else. So आपको dotted lines हैं, उसके अंदर सिर्फ नाम लिखना है. Whether you love listening songs or you collect stamp, you have stamp collection, or you sing songs, you play guitar, or you are into some activity, तो whatever dramatics वगैरह जो भी है, तो आपने जो भी हॉबीज के तौर पे आप रखते हो वो लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है. लेकिन क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, उसके तहत जितने क्वेश्चन बनते हैं, जो क्या चीज है, कब आपने शुरू किया, अभी तक कितना कर लिया, पार्टिसिपेट कितनी बार किया है, हाउ रेगुलर यू आर विद योर हॉबी, तो वो सब आंसर आपने करने के लिए रेडी रहना है. थर्ड 11C. 11C is about your participation in extracurricular activities, whether it is debate, extempore, skit, dramatics, whether it's adventure activities, whether it is trekking activity, project making. All of these things are falling under extracurricular activities. So many more. You are supposed to again write the activity name, then the duration. The duration is again you should write the year of participation. So उसमें क्लियर हो जाता है कि आपने एक साल में पार्टिसिपेट किया, एक बारी या many times. So अगर आपने एक ही बार पार्टिसिपेट किया है, तो यानी एक बार पार्टिसिपेट करते हो और मन भर जाता है, फिर आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हो.
ठीक है, तो यू आर लाइक अ फिकल माइंडेड कि कभी इधर तो कभी उधर, कभी मन इधर डोला कभी उधर मन डोला। ये पहली एक, या आपके स्कूल में हर साल कोई ना कोई नई एक्टिविटी कराई जाती है, वो भी हो सकता है। तो आपको यू हैव वेरी क्लियर टू आंसर कि सर इट वाज हेल्ड लाइक दिस एंड देन आफ्टर 3 इयर्स बट बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 12 सो आई डिड नॉट टेक पार्ट। तो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो आप लिख रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो इंटरव्यू में जब आएगा सारा का सारे क्वेश्चंस आपसे ही रिलेटेड है, कोई इधर-उधर हम ज्यादा नहीं पूछ रहे, ठीक है ना? सो देयरफॉर यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड ऑफ व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ एंड लाइक दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। 4. 11D. 11D is all about position of responsibility held. This position of responsibility held may be starting from your being a school captain, vice captain, house captain, vice captain, prefect, or captain of the football team or basketball team. ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कैप्टन होते हैं, या एनसीसी के अंदर आप you can be appointment holder, something like the senior under officer, junior under officer, and whatever. Okay. So whatever appointments you are, if there are too many appointments, more than 5, ठीक है ना? Then you filter out कि सबसे ज्यादा important वाली appointment क्या लिखूं, जिसमें you have got something to tell that you did something phenomenal for which you got appreciation or commendation. Don't write a thing for which you were condemned. Okay, difference between commendation and condemnation. So understand the two and do not talk about the thing where you were condemned. मतलब आपको डंडा पड़ा, ठीक है? So do not mention about that. Write about the good thing which you have achieved in your life and score 3 pointers by highlighting that what special things you did when you were in the position of responsibility. So like that, you should be very clear. Okay. Now, after seeing this, then comes that which service would you like to join? So whether Army, Air Force, or Navy, and within that, which particular branch you are opting for. Whichever service and whichever branch you are opting for, you must try to know more and more about that. Firstly, the service, and then about the branch. As much information you can gain and keep them in your mind. कहीं किताब के अंदर नहीं रह जाए, अपने दिमाग के अंदर खास तौर से कि नेवी क्या करती है, एयरफोर्स क्या करती है, आर्मी क्या करती है, whichever is applicable to you, and then हर एक में क्या क्या ब्रांच है, whichever you want to join, why. वो क्यों जो है ना, जो क्यों वाला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो. You should have sufficient reasons whether it is your father's regiment that is why you want to join, ना उनके डंडी पे आप चल रहे हो, या you like it because of some very particular reason. ठीक है, तो आपने स्पेसिफिकली बताना है. पैरा नंबर 12 हो गया. आपकी पैरा नंबर 13. पैरा नंबर 13 is for those candidates who are repeating, that is they are going for SSB the second or third or fourth chance, like that. They are supposed to provide data of the previous SSBs attended. SSB attendance means once you have entered the gate and participated in stage 1 also, then it is taken as one chance. Okay, ये नहीं कि आपने स्टेज 1 क्लियर किया, आप स्टेज 2 में पार करके कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, then it will be one chance. No, the entire thing is that once you have entered the gate of the SSB, then it is one chance. Okay, like that. तो ये है पूरा PIQ फॉर्म. ओके, अब ये PIQ फॉर्म में जो मैंने बताया है कि कुछ जगह जो है कितना लिखना है, तो जो अभी मैं हॉबीज में बताया था उसी प्रकार से गेम्स के अंदर पहले मैं ये पैरा नंबर 11 है ना, वो बहुत ही महत्व हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या भरूं क्या नहीं भरूं. सो पैरा नंबर 11 के अंदर जो पहले आता है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स के अंदर आपने सबसे ऊपर जो लिखना है, जो कि अगर आपका कोई गेम है जिसमें जिसमें आपने स्टेट या नेशनल लेवल पार्टिसिपेट किया है, सो दैट शुड ऑब्वियसली बी गिवन अ मैक्सिमम वेटेज. बट बी वेरी क्लियर, इफ यू हैव गॉन एट दैट लेवल, देन सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए इंक्लूडिंग द रूल्स एंड गेम्स. वो तो है ही, उसके बावजूद जो है आपने अगर इंडिविजुअल गेम्स है लाइक एथलेटिक्स, सो इफ यू आर इन रनिंग देन यू शुड नो द टाइमिंग्स. इफ यू आर इन द फील्ड इवेंट्स लाइक हाई जंप या लॉन्ग जंप या डिस्कस थ्रो, देन यू शुड नो द डिस्टेंस, द मेजरमेंट. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ टीम गेम्स और आपने बहुत कुछ जीता है, सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दैट कि सबसे टफेस्ट मैच क्या था, व्हिच पोजीशन वर यू प्लेइंग, देन व्हाट वाज योर रोल इन द विन. ओके, हु वाज अ बेटर प्लेयर इन द अपोनेंट साइड. इसके अगर ऊपर आपको नंबर ज्यादा देने हैं तो हम पूछेंगे, जैसे आपने लिख दिया फुटबॉल, ठीक है, तो बोले डू यू वॉच इंग्लिश प्रीमियर लीग या इंडियन प्रीमियर लीग, व्हिच इज योर फेवरेट टीम, हु इज द फेवरेट प्लेयर ऑफ योर्स. ओके, सो ऐसे ऐसे करके अगर ज्यादा नंबर आपको हमें हमारी समझ में आपको देने चाहिए, तो हम फिर पहले ऐसे वैसे क्वेश्चन भी पूछेंगे. सो अकॉर्डिंगली इफ यू फील दैट यू हैव डन समथिंग गुड इन द स्पोर्ट्स फील्ड एट स्टेट लेवल और रीजनल लेवल इन CBSE और PV, then you should be well prepared for that particular game. Don't start talking about games where you do not sweat. Ludo or Chapo और खो में थोड़ा सा sweat तो आ जाता है, लेकिन फिर भी it's not a armed forces game. So avoid as much as possible such games. Until कुछ लिखने को नहीं है, ठीक. या judo, karate, taekwondo सब चलेगा, but understand when you are talking about the contact games, then you should be very clear that how the categories are selected. Number 1. Number 2, if you are say following karate, then what are the major differences between karate and judo and taekwondo and wushu and all those things. तो वो डिफरेंस भी पता होना चाहिए. ओके, दिस इज नंबर 2. नंबर 3, आई वाज टेलिंग अबाउट हाउ मेनी. सो हाउ मेनी का ये चक्कर है कि अगर जो आपने स्टेट के हाई लेवल पे किसी एक गेम में भी करा है, सो इफ यू राइट अप टू 4 गेम्स इट इज ओके, व्हिच मे इंक्लूड वन और कैजुअल गेम आल्सो. अगर आपने सिर्फ स्कूल लेवल पे खेला है, इंटर स्कूल तक खेला है, सॉरी इंटर हाउस तक खेला है, सो देन यू शुड बी मेंशनिंग अबाउट अप टू 5 गेम्स, नॉट मोर देन दैट. मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, अगर खेला है तो, अगर नहीं खेला तो कैसे लिखोगे. नाउ इफ सम ऑफ यू हैव नॉट प्लेड एनी गेम, देन व्हाट शुड यू बी डूइंग. सो सबसे आसान क्या है, जो आज ही स्टार्ट कर सकते हो और जब तक SSB आएगा तब तक कुछ तो पालोगे, कुछ तो कर लोगे. क्या है वो? है रनिंग. सो बेटर स्टार्ट रनिंग एंड गो अप टू 10 किलोमीटर्स. एंड इफ इन योर एरिया बहुत सारी मैराथन होती है उधर, 5 किलोमीटर रन, 10 किलोमीटर रन, हाफ मैराथन ऑफ 21 किलोमीटर, फुल मैराथन ऑफ 42 किलोमीटर, देन आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस देन यू मस्ट गो फॉर. So whenever you are talking about running, do not miss out कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रनिंग क्या है, कितना डिस्टेंस आप लोग भागते हो और टाइमिंग क्या देते हो. ये नहीं बोलना कि टू आई सर आई गो फॉर रन 2 किलोमीटर्स, आई टेक 20 मिनट्स. और 20 मिनट में मैं वॉकिंग करके, तो या तो आप चीटी की चाल भाग रहे थे, तो उसको भागना नहीं बोलते, उसको वॉक एंड जॉग एंड वॉक करते हैं. So therefore understand that whatever you are going to say and write, be aware that we are looking for those things कि आप कहने के लिए ही कह दे रहे हो या कुछ करके फिर आप बोल रहे हो.
Similarly, in the extracurricular activities, you should be very clear about what you have done in life. Like if you have taken part in debate, then you should be very clear that क्या topic था, उसके आप for बोल रहे थे, against बोल रहे थे, आपने क्या main point दिए, आपके opponent ने क्या main point दिए, how did you counter them? Did you get any appreciation or you did not get any appreciation? Okay, whether you took only once, but or many times, very good. If only once, then क्या हो गया, क्यों छोड़ दिया? What was the compulsion for you not taking part again? तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन बनते हैं. You also have to be ready for those counter questions. अभी मैंने यहाँ बता दिया, थोड़ा जो मैंने यहाँ बता दिया, I will try to just tell you and then move on. ठीक है, when I come to the interview वाला class, that is tomorrow. ठीक है, but जहाँ नहीं बताया वहाँ बताऊंगा. ठीक है, any questions in this class? Yeah, you. Yes. आयुषी सबसे पहले. वो आराम से वॉल्यूम थोड़ा कम. हाँ, बोलो आयुषी. तो एक मिनट होल्ड ऑन. या आयुषी. Raj Singh. Yes, sir. So, sir, my father was in army, so I participated in many activities that was happening in our unit. So, sir, can you mention it? मैंने बताया ना अभी कि टाइम अभी मैं इंटरव्यू में जब आऊंगा ना तो बताऊंगा कि हमारे पास टाइम तो उतना ही है. अगर से वो सारी कुछ चीज लिख दोगे आप और सब चीज में बात करना चलूंगा तो मैं आगे वाली चीजें तो कुछ नहीं पाऊंगा. ठीक है, तो क्या मैं करूंगा, मैं आपने अपना फिल्टर नहीं लगाया है कि बिकॉज यू फील दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू डिड नॉट कैरी आउट ऑफ फिल्टरेशन टू सी राइट ओनली दोस थिंग्स व्हिच वर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर यू. सो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से फिल्टर लगा देंगे कि मैं ये पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर में पूछूंगा क्वेश्चन, बाकी छोड़ दूंगा, तो मेरा इंटरव्यू खत्म ही नहीं होगा. ठीक है, अब इसमें क्या बात है कि इफ दैट सीरियल नंबर 2 और 4 जो हमने छोड़ दिया उसमें आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा बताना चाहते थे, वहां पे वो इंप्रेसिव थिंग आपने की हुई थी, लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन पूछा नहीं. जब पूछा नहीं तो आप बता नहीं पाओगे तो नुकसान किसका हो रहा है, आपका हो रहा है. सो देयरफॉर द फिल्टर शुड बी अप्लाइड एट योर एंड, डोंट लीव इट टू मी. मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मैं बीच में वो कुछ नहीं पूछूंगा, आपका नुकसान. ठीक है, ओके. या आयुषी कैरी ऑन. Yes, sir. So you said we should remember the percentage of our 8th, 9th, and 11th standards. So, sir, are we supposed to bring report card of those standards or not? No. We are not looking at the report card, but you should remember it. It should not be happening. We will cross question you to find out. ठीक है ना, अगर हमें आप जिस प्रकार से बोलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आपकी आंखें, आपका चेहरा, सब कुछ बोलता है साथ साथ. ठीक है, the glow on your face will wither away, your eyes will start looking left and right if you are not speaking the truth. ठीक है, तो वो हम भी एक्सपर्ट हो जाते हैं. ठीक है, so therefore we will believe in you till we feel that you are not speaking the truth, or you give us reasons to say understand that you are not speaking the truth. So we don't have to see at your report card, we will understand. ठीक है, और भी हमारे पास चीजें हैं जिसे हम तहत में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बाद में, तो अगर आप अपने खुद ही जंप हो जाओगे कि आप क्या कहें. Okay, sir. And so, what do we have to write in the name of commission in 12th part? PRC. एनडीए है तो पीआरसी हो गया, परमानेंट कमीशन, परमानेंट रेजिमेंटल कमीशन. एसएससी अब लिखना है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, और यहाँ पे क्योंकि एनडीए है तो पीआरसी आएगा. या वीनू देवी. Yes, sir, I have to ask that can hobby and the sports which we have participated can be same? So because sir, I participated in the sports which are my hobby only. Good that you have asked me this. Okay, everybody understand this, that kindly do not repeat the same activity under sports head, under hobbies head and under extracurricular activity head. अगर लिखने में तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में जो एसएससी के दिमाग में क्या चलेगा, हमारे दिमाग में ये चलेगा कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट अदर देन फुटबॉल, जैसे तीनों जगह लिख दिया, तो अदर देन फुटबॉल उसको कुछ नहीं आता, सारा टाइम फुटबॉल खेल के और जगह कुछ उसने एक्टिविटी में कुछ जगह पर ध्यान दिया ही नहीं. ठीक है, जब वो आर्मी में भी आएगा तो वो फुटबॉल ही करता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा. तो देयरफॉर डू नॉट गिव अस अ चांस टू सी और understand that other than this one activity you do not take part in any other activity or you do not do any other activity. ठीक है, so Okay, sir. Thank you, sir. therefore try to be different in all the each head. Dubey. Atul. Hello, sir. Yes. Sir, I have doubt that in father's name, do we have to write a title like late if father is not alive? हाँ, obviously वो तो लिखोगे आप, और सीधे और साथ ही साथ में जो पैरा नंबर 6 ए और बी वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसा है तो. सर, पैरा नंबर 6 सी पार्ट में क्या मेंशन करना है? हाँ, वहाँ लिख दो, वहाँ डैश बना रहेगा आपको, उसमें लिख दो कि नाउ अभी तो लेट हो गए, वहाँ पे मतलब नहीं रहे तो उसके बाद उनका नाम तो लिखना है, बट वहाँ पे डैश आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख रखी है कि कब वो गुजरे और एट व्हाट वाज योर एज. ठीक है. एंड सर, वन मोर डाउट सर, डू वी हैव टू राइट ऑक्यूपेशन और इनकम? हाउ विल यू राइट, मतलब उसका मीनिंग तो रहेगा नहीं क्योंकि अब नहीं है तो नहीं है. ठीक है, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट द पास्ट कि वो किस ओहदे पर थे, उनकी एजुकेशन क्या थी. यस सर. अतुल. सुन नहीं है. दीपांशु. गुड इवनिंग. दीपांशु कौन बोल रहा है? सर अतुल. हाँ, अतुल बोलो. अतुल तो देते हैं, दो नहीं हुई है जैसे दो वाले पेयर. ओके, सॉरी. या तो बोलो. Sir, due to COVID, our schools are closed, so our 8th and 9th result is not announced in school. So what we write in that portion? Oh well, that COVID. ऐसा नहीं हो सकता कि अनाउंस नहीं हुआ तो आप जाकर स्कूल से पता करो कि क्या मार्क्स है. ठीक है ना, व्हाट हाउ मच मार्क्स फॉर यू गिवन टू यू. So exam Okay. अगर वो इंटरनल असेसमेंट हुआ होगा तो मार्क्स दिए होंगे. अगर अनाउंस नहीं पूछना पड़ेगा ना फादर वहां से आकर. Okay, sir, that I will. Otherwise we will ask you some silly question, abstract questions. We'll ask you कि how much were you expecting even if they were not announced. Okay, which is the subject which you like the most in your from your 9th subject. हम उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे दो चार, Okay, sir. Yes. जो भी 9th क्लास का जो भी अच्छा लगता था आपको सब्जेक्ट वहां से आप क्वेश्चन पूछेंगे, पता कर लेंगे कि नॉलेज है कि नहीं है. ठीक है. Yes, sir. Sir, another question is that how to write मतलब जैसे ये ages हैं, कब से कब खिलाया आपने, period of duration. I have already mentioned the year of participation. So 2020, 2021, 22, 23, 2022, 23 हो गया. बीच में गैप है तो आप ईयर मेंशन करो. Okay, sir. Thanks, sir. Okay, eternity चर्चा. Sorry about the name, sir. Sorry about the name, sir. I will change tomorrow, sir. No, Sir, my doubt is that
that you asked that we can mention subject achievements in the academic column. So does it matter that the subject I mentioned in my academic qualification means I have excelled in it, but my favorite subject is something else? Yes, it can be. It can be. Sir, so I can do it. Yes, yes. Sir, regarding हमें डाउट आएगा आपके ऊपर तो मैं पूछूंगा कि हम पूछेंगे आपसे फिर क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना? पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास रेडी हो जाएगा कि इसमें तो लिखा हुआ है, इस पे टॉपर किसने किया था, बेस्ट परफॉर्मेंस, और ये फेवरेट सब्जेक्ट ये है, ऐसा क्यों? ओके, लाइक दैट. Okay, sir, regarding hobbies and interests, sir, if both are the same, what do we do? Like, my hobbies are. अरे हॉबीज और इंटरेस्ट दोनों नहीं लिखना है, either way it is a common thing which you have to write, both are under the same head. पैरा नंबर 11B, that is it बस, ठीक है? इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट इज लाइक योर एडवेंचर एक्टिविटी मैंने बताया, या आपके इंटरेस्ट इज आल्सो इंटरेस्ट इज गोइंग फॉर बर्ड वाचिंग, ठीक है? और यू आर टेकिंग पार्ट इन सम नाटक और समथिंग लाइक दैट, वो एक्टिविटी में आ जाएगा, या आप यहाँ पे लिखो, एक जगह लिखोगे. अगर वो हॉबी मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर स्पेयर टाइम. इंटरेस्ट के लिए आपको यू हैव टू टेक आउट टाइम एंड इट इज वन ऑफ एक्टिविटीज व्हिच यू हैव टू गो आउट फॉर इट, ओके? एंड यू डू इट ऑन अ रिपीटेड बेसिस, सो दैट बिकम्स इंटरेस्ट. अदरवाइज एक ही बार किया तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाएगी. So we mention any one of for both hobbies and interests. एक ही लाइन है, you don't have to mention the hobbies, this is this, interest this. आपका कोई आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है. The question also will be asked in a similar manner, ठीक है? Ayush, Ayush, you have said, पहले दूसरा चांस. राघव शर्मा. Good evening, sir. Good evening. So I have the doubt in sports section. I used to play cricket in an academy for 5 years, but I haven't played it since 7 years. Doesn't matter. I can. You right, but I don't want anything. Whatever you did before class 8, I'm not interested. 8 के बाद जब भी किया आप देखो. वो नहीं बोलेगा कि आप ये नहीं बोलोगे कि आई प्लेड इन क्लास 3 और 4. वो बच्चे थे, आपने क्या खेला क्या नहीं खेला, ना आप अगर बॉलर थे तो ना पेस था, ना उसके अंदर कोई बड़ी बॉल से खेलते थे, हमें क्या मतलब उससे, ठीक है? सो लाइक दैट. Okay, sir. आशुतोष तिवारी. Sir, I have interest in the geopolitics, so since it is not outer activity, so should I mention or not? So you mention it, but be prepared for answering questions. क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया, ठीक है, so it will help you in GTO के अंदर, इसमें लेक्चर में और GD के अंदर, ठीक है? बट हियर अगर जो आप PIQ में लिख रहे हो, तो अगर हमें लगेगा कि आप तो पढ़ते हो, जियोस्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हो, तो हम उसको पता करने की कोशिश करेंगे, so that if you are actually knowing about it, then we will give you higher marks. So to that extent, you write interest के अंदर. Okay, sir. Yeah, मैं क्या दूँ? Yes, sir. Sir, I want to ask that what if we have opted for NCC before 4 months and we have not received like any certificate till now? So do we have to mention in that case? हाँ, तो लिख दो आप. अगर आपने एग्जाम में अपीयर किए हुए हो, तो लिख दो A सर्टिफिकेट ब्रैकेट में अपीयर्ड. नहीं सर, एग्जाम में अपीयर नहीं किया, लाइक ज्वाइन ही रिसेंटली किया है, 4 to 5 months हुए हैं. हाँ, तो लिख दो आप कि लिखो कि स्टडिंग लिखो ना, so जहाँ पे रिजल्ट है आप लिखो स्टडिंग सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर व्हाटएवर. Okay, sir. या अभी कौन, या दीपांशु चौधरी. Sir, I have recently cleared an examination. So should I mention such type of activity? व्हाट एग्जामिनेशन? Sir, I have got merited in Air Force examination. वो क्वेश्चन के वक्त में आएगा, जब वो पूछेंगे, क्वेश्चन में आता है वो लास्ट में, तो वेट फॉर दिस थिंग्स, आपने क्लियर हो जाएगा. जब पूछेंगे कि इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड देन व्हाट, देन यू से दैट आई एम इन मेरिट इन दिस, आई विल गो फॉर दैट, आई करेक्ट माय सेल्फ, असेस माय सेल्फ, करेक्ट माय सेल्फ एंड देन गो फॉर द एसएलपी अगेन, ठीक है? आयुषी. Yes, sir. So actually, my mom is housewife as well as on side occupation, she takes tuition of some students. So should I mention this or not? So what is higher of the two? What is higher of the two? Part time tuitions, ठीक है ना? Okay, sir. And second, What will carry more weight? You have to mention that ना. what did you say, sir? Whatever carries more weight. More weight means कुछ अगर वो ट्यूशन पढ़ा रही है, मतलब कि और बहुत अच्छा काम कर रही है. हाउसवाइफ तो इज अ नॉर्मल डे टू डे वर्क. ऑल मदर्स आर डूइंग दैट हाउसवर्क, इवन इफ दे आर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट आल्सो, देन आल्सो दे आर डूइंग हाउसवाइफ वाला काम, हाउसवर्क, है ना? या Sir, in the seventh part and in sub part of B, so do we have to mention the 10+2 equivalent as because I'm 12th appearing student? So you in your 12th row you write appearing. okay, sir. And so what about that percentage? वो छोड़ दो, obviously appearing लिख दो, तो छूटेगा वो तो. हाँ, yes, sir. Okay. Okay, मैं क्या दूँ? Okay, last question है, and then after eternity चर्चा. Yeah. Yes, sir. I want to ask, like in educational qualifications, what year we have to mention? The year of passing or the year of continuation? Year of passing. The year you got a certificate, then only that is what you have to mention. Yeah. Easy. Eternity हो गया आपका? Okay, fine. So okay. So now this is about PIQ. Okay, you have asked too many questions. Now I will be talking to you about the today the interview technique. Okay. Now the interview technique, just listen to it. It is for interest that you should keep in the back of your mind that what interview and the generic aspect to it also is relevant to other interviews too. But obviously since I am teaching you about the PIQ, so SSC का बीच में धारणा महत्व है, वो मैं बता जाऊंगा. Now basically what is a interview? It is simply a friendly talk between two people, that is the candidate and the assessor. Candidate is called the interviewee and the assessor is called the interviewer. It is basically to find out about various data, to ascertain various data from the candidate by the interviewer. Something like what are the personality aspects or the human resource aspect. If it is a job for a human resource thing, if it's for the sales thing, then it's all the questions about sales aspects. If it is about for some engineering or some vacancies of teaching or profession, obviously it is related to your knowledge base. So like this, all the questions will be asked to you. Now, at the SSB, the assessor is simply focused on your personality traits, what I talked to you about yesterday. And PIQ form becomes the basis of your interview, whereas in other interviews, it is the CV which becomes the basis of your interview. Now, there are basically three types of interviews. One is a completely structured interview where all the questions are set. Same questions are being asked to virtually all the candidates, and you are answering them. So you are knowing, you're prepared, and then you are answering to the best of your ability. और उसके अंदर जब आंसर बोल दिया तो शायद थोड़े से पास क्वेश्चंस हुए, तो that's it. The second is the open-ended interview where the questions are not set. आपका सिलेबस दे रखा है और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है.
And the third is a mix of two, that is a semi-structured interview, where part of the interview is structured, set questions हैं, पता है पहले से यही पूछा जाएगा, और उसके बताने के बाद then is the open part starts, and then any questions can be asked to whatever you have applied to the structured portion. And this is what is being done in the SSB. The SSB interview is a semi-structured interview. Now here the interviewing officer is getting a one-to-one connect with you. There's nobody else. Okay. So here even the interviewee, that is the candidate, also gets a chance to, at the end of the interview, when he's asked, is there anything else you would like to say? So then the interviewee is getting a chance to tell the assessor something which has been missed out, which has not been discussed, and the candidate feels that it is pretty important or something which will impress the assessor, and will, and as a result, he will get higher marks. So therefore, it is in the interview technique only that the candidate has got this freedom. In all other tests, there is no such freedom available to the candidate. Now, understand this. It has been scientifically proven, and you would have also, experienced it till now, wherever you have studied, that a particular class or a period is just about 40 plus minus 5 minutes. It is for a reason that the human brain remains focused for that much time. So therefore, the interview, as far as the SSB is concerned, is also kept for 40 plus minus 5 minutes. So your interview may range between 35 to 45 minutes. Those who have achieved many things in life and the PIQ is houseful, so then it may extend to 45 minutes. And those whose PIQ is a little blank type and 1 or 2 rows are blank and nothing written there, so obviously it will finish off in an earlier time frame. So like that. So understand this. अगर ये इतना ही टाइम अवेलेबल है, उसी के अंदर आपने इम्प्रेस करना है एसेसर को. अगर उसको एसेसर को इम्प्रेस करना है, तो वो बात करनी है जिससे कि वो इम्प्रेस होए, ना कि सब इधर उधर की बातें और जिसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ बोलने के लायक ही है. So therefore you have to follow the ABC rule. The ABC rule, the A stands for accuracy of data. That whatever data you are providing to the assessor, it should be correct and not incorrect. In the sense that whether it is about your marks or whether you are talking about some games can their timings or distance or whatever. So wherever the data, all in general awareness, some data is being provided by you, then ensure that they are all accurate. Inaccurate data will reduce your impression. The B stands for brevity. Now this is directly linked to your power of expression. So if you have a good power of expression, you will be able to express a thing in as little or lesser number of words as possible. On my side, I would like to also tell you that for every question which is asked, your answer should not exceed 3 sentences. Don't try to, stretch your answers. कि ये भी समझा देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ. No, it is not a history answer. कि सब कुछ बता देता हूँ. नहीं. You have to filter in your mind quickly कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं ये जवाब दूंगा या दूंगी. So do not leave that filtration part to us. Do the filter part at your end and tell me the answer in just a maximum of 3 sentences. Except if you have achieved in some particular activity at a very high level, that is the state or high level, in the extracurricular activities, say at these inter-house competitions or at least 1 or 2 state level also, or there was some open district level competition, then you may extend your answers to the 4th, 5th or 6th sentence also. But otherwise, other than that, just answer in as brief as possible. Beyond that, if me as assessor has got any more things to inquire or ask, then I will ask you a second question. Then answer another 3 sentences. But अपनी तरफ से सारे पत्ते खोल के नहीं रख देने हमारे सामने, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस आपको क्रॉस क्वेश्चन के लिए और हमें ऑलरेडी आप दोगे हमारे ऑन द प्लेटर, ना कि हमें सोचना पड़ेगा कि किससे क्या क्वेश्चन पूछें. ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि ज्यादा बोलने में, टू द पॉइंट बोलने में बहुत फायदा है और बहुत ज्यादा बोलने में नुकसान होगा, क्योंकि हमारे पास क्रॉस क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाएंगे. Okay. The C stands for clarity. That when you speak, your voice, your diction, your volume of speech should be good, and not that every time you speak, the assessor is asking you, can you repeat it, please? So like that. As also, see, you may be belonging to any part of India, and so will be the assessor belonging to any part of India. So understanding each other's language may be a problem. I'm saying may be a problem, but if you are speaking with clarity, then it will not be so. So therefore, ensure clarity. The second rule is ACE. 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 Okay. The first is A stands for alertness. That alertness is that when you are participating in an interview, at that point in time you are saying so many things. If your answer is getting elongated, the assessor may butt in. The assessor may butt in to say that and ask the second question, क्योंकि आपका ऐसे भी time exceed कर रहा है. ठीक है. Now be alert. Stop speaking. Okay. Don't continue with whatever you're speaking. Stop speaking and start listening to what is being asked now. And after the second question has been asked, answer to that now. Don't fall back onto the previous whatever you were saying. Okay. So ensure that. The C stands for cheerfulness. The cheerfulness part is a slight smile on your face and no stressful lines on your forehead. Okay. Especially it will happen during the course of the interview that few questions you will not be able to answer. Now that should not put you in a stressful condition. कोई बात नहीं, नहीं आंसर किया तो नहीं आंसर किया. Sometimes you must understand we are asking you questions to assess कि क्या हम इस बच्चे को extra marks, additional marks दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. So therefore, if that particular question you are not being able to answer, it is simply that additional marks are going. आपको fail तो नहीं कर सकते. ठीक है. So do not get into a stressful situation and show it on your face. आप बिल्कुल ही सहमे से हो गए और बिल्कुल ही ऐसा कौन सा फेस या बड़ा सीरियस फेस हो गया. That will send a wrong message. और हम अपने नोट में लिखेंगे कि he gets stressed easily. Okay. So a leader is not supposed to get stressed. Understand this. So therefore, ensure that you remain cheerful, a slight smile on your face, and no stressful lines on your. The E stands for enthusiasm. When you are taking part in interview or maybe any test, that enthusiasm, your body language, that you have come here to be selected for the armed forces, which you actually want to. अगर वो actually want to, तो आपका body language जो है वो दिखाना चाहिए, और ना कि आप डरे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा. आप तैयारी करके आए हो, that enthusiasm, that body language, the glow in your face, the glint in your eyes, all to be visible to us. So these are body languages, and which is called non-verbal communication. All of those aspects we are adept at looking and making out ये बच्चे के साथ क्या दिमाग के अंदर क्या घूम रहा है. So therefore, not to be overtly worried about all these things, but at the same time telling you that we are also looking at these things. So all along, your power of expression is very, very important. अब ये तरीके से आप बोलते हो, कितने में बोलते हो, important है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो यही बातें करेगा.
ओके, यहाँ बातें करके ही आपको हमें इम्प्रेस करना है. So अगर वो आप चलता रुकता रहोगे या with too many pauses या your choice of words is not correct, so then it will be a non-impressive interview. However, if you speak like the water flows in a river, then you are impressive. Using the right word at the right point is also very much there. Now, how to ensure that your speech is like water flowing in a river is when your rate of speaking is slower than your rate of thinking. ओके, सो अब वो आपको ही पता है, वो पता किसी को नहीं पता चलेगा. आपको एहसास होगा कि जब मैं इतनी स्पीड से बोलता हूँ तो अच्छा स्मूथली चलता है खेल, और अगर और इससे फास्ट बोलूंगा तो खराब हो जाता है. तो स्टिक टू दैट जहाँ खेल जहाँ तक अच्छा है. Now in SSB you are permitted to speak either in English or Hindi. Preferable is English. If you decide to use dual language, both English and Hindi, then the switch from English to Hindi and back to English should be a smooth one. For the interview, you should be well dressed, not over dressed. Well dressed simply implies light colored shirt and a dark colored pant. During winters, you don't have to wear a suit. You may wear a tie and a combination coat. Same goes for girls. Girls have the privilege of that they may wear the Indian dress, but again, what I would suggest that wear a colored Indian dress too. Okay. Now your mannerisms and courtesies in the form of thank you and sorry, wherever applicable, should be made use of. Something like if you are asked to sit on the chair, then you should say thank you before sitting. If now I'll come back to you. Instead of thinking and thinking, clock is ticking away and your time is getting wasted out. Now your volume of speech. Okay, I'll go a little slow. Your volume of speech should be loud enough. Now why I'm saying this? Yeah. Buffering हो रहा है. Everybody finding this problem? Buffering? Hello, sir. So maybe there is some network issue. एक मिनट. नेट तो ठीक था. Okay, what I will do. Just a moment. I will exit it from the second. I will be exiting from the second. Okay now? Yes, sir. Okay. Yes. So anybody missed out my previous whatever I was saying? So please begin from the dress code button. So you, as far as dress is concerned, light colored shirt and a dark colored pant is what is good enough. And also ensure that you during winters you are wearing a tie and also a combination coat rather than a suit. Similarly for girls, you can wear an Indian dress but wear a light colored dress rather than a dark colored dress. Then as far as your mannerisms and courtesies goes, something like saying thank you and sorry wherever applicable, you must make use of it. Something like when you are offered a chair to sit before the interview, you are supposed to say thank you before you take your chair. And if for a reason you are not able to remember some particular answer to a question or there's a blackout, then you must simply say, sorry sir, I'll come back to you, rather than waiting and thinking all about and wasting time over a question. Now, in normal interviews, you are sitting across the table. So you are sitting face to face. Out here in the SSB, you are made to sit at a public distance of 12 feet away. So therefore, you have to speak a little louder. Okay. And you should not be shouting, but that volume you should get adjusted to, and it should be loud enough to be heard by the assessor. And this will be checked out before the actual start of the interview too. So this you have to be prepared that you will be asked. Have to speak a little louder. There are certain things which you must avoid. These include that giving very lengthy answers. Obviously, time is limited, and what will happen is that we will miss out on certain questions or cross questions. Until we ask you cross questions on a particular topic, whatever you have answered to the structured portion, till then we are not giving you credit. Simple. So understand this. अगर आप एक क्वेश्चन ने पूछा उसके बारे में बोलते जा रहे हो कोई नहीं जा रहे हो, and this thing goes specially for the girl candidates. The girl candidates आपने फिल्टर करना है कि मैं इतना ही बोलूंगी, because एक छोटी सी चीज बोलने पर आपने बहुत सारा बोल देते हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, and it's a natural process, God given, so don't have to feel bad about it, but it's a natural, so you have to control your answers length. Okay. Now do not beat about the bush. Come to the point straight away. Something like if you are not scored well in your class 11th or 12th, whatever is applicable, then you must answer what happened. If your time management was poor, or you were not well prepared, or you were focusing more on your sports extracurricular activities, then say so, rather than telling me, sir, actually this happened, that happened, and not coming to the point straight away. So if you are to the point, first of all, you will save on time, and एक sentence के अंदर आप खत्म कर दोगे, या maximum 2 sentences. Instead of explaining it over and over and over, we will also say, okay, not understood, or please elaborate. तो हम ऐसे करके बोलेंगे, उसको और खींच देंगे, तो टाइम इसका खराब हो रहा है आपका. So understand this aspect. Also, do not start boasting something. तो मैंने example दिया था, कल भी दे रहा था, अभी मैं repeat कर रहा हूँ उसको, हालांकि कि something like you were saying that how do you keep yourself physically fit? Sir, I go for run every day. Okay. So how many kilometers you go? Sir, 2 kilometers. How much time do you take? Sir, 20 minutes. So हम भी चुप रहेंगे कि अच्छा, very good. I'll say only very good. But मन में क्या सोच रहे हैं कि 2 किलोमीटर में मैं चल के कर लेता हूँ 20 मिनट में. ये क्या बता रहा है कि ये बच्चा क्या बता रहा है कि मैं 2 किलोमीटर भाग के 20 मिनट लेता हूँ, ठीक है ना? That means not telling the truth or never ever measure the time taken by. So therefore, understand all these aspects. Now, do not repeat the same thing over and over again. What I mentioned in the PIQ form to somebody's question, query, that same thing under the sports head, same thing under the hobbies head, and same thing under the extracurricular activities, because thereafter we will feel that other than this activity, the candidate was not at all interested in other things. But armed forces के अंदर आपको बहुत सारी activities में interest रहना पड़ता है. So in the life which you have lived right now, you are limited to all your activities and all your focus in one particular activity. तो अब आप कैसे बदली करोगे? तो perhaps you are not fit to become a leader in the armed forces. Now,
when questions are being asked to you, it's a natural process. Sometimes it happens with somebody that a blackout will happen. That answer आता था, अभी भूल गया, निकल गया दिमाग से. So do not keep looking in the air, in the sky, towards the sky, that अभी वो याद आ जाएगा. 1 second, 1.5 second, 2 seconds, बस. Thereafter you should say, I'll come back to you. Don't waste time thinking about it. Okay. Now it will happen in the course of interview that you are not being able to answer 1, 2, 3, 4 questions and consecutively also. So do not start getting into stressful condition. Just keep your mind cool. Do not let the smile and the frown smile slip away and the frown appear on your forehead. Be ready to answer the next question in the best possible way. Understand? I've already told you. Perhaps these questions were for taking you higher up. अब वही होगा कि आपको कम नंबर मिलेंगे. That's it. बस और कुछ नहीं. So therefore, there is no point in getting tense. You have given so many exams in your life. This is just another exam. So deal with it accordingly. Now, especially when such a thing is happening, when you are not able to answer any questions, then for some candidates, board section are supposed to be straight when you're sitting down. So slowly it starts curving up, and that is showing that reflects that your confidence level is slowly coming down like this. Okay, so understand this aspect. Now, during the course of the interview, there will be many personalities who will be discussed with you. Your teachers, friends, parents, siblings, your neighborhood friends. उस सबके बारे में बात होगी. So what are the good things that you see in them, which are some areas where you feel that they need to improve upon. Now, so at points you need to be critical of them when the critic being asked maybe one thing or two things, but it should never happen that you are on and on and on. Some of the candidates they come कि अभी मौका मिला है मेरे दोस्त की बात बताने का, मैं पूरा का पूरा उसका खुलासा कर देता हूँ. So it will not be taken in a good way, and perhaps you are taxing your own foot by talking too much negative about your friend. That means you are not socially adaptable, and also you lack cooperation. So all of this you should be well aware of. So certain things which you must keep in mind, that throughout the interview be crisp and clear and have a positive attitude, which I've been repeating again and again, and this thing I will keep repeating, that throughout the course of the SSB, you must have a positive attitude and a positive thought process, and then only you can remain tension free for the entire duration of the interview. The gentle smile on the face is a good positive, and if you can maintain it, then very good. Don't lose your composure ever. Okay? The thought should not cross your mind. If it is crossing, then tell that thought to vanish away. That is how you have to behave. Now, do not start relying on your friend. Your life is your life, and all the questions are related to your life. So whatever you have mentioned in your PIQ, you will be telling me or the interviewing officer, and he will be querying you on those things what you are telling. अब इसके बीच में आपका दोस्त कहाँ से आ गया? So there is no point in running after your friends to ask तुमसे क्या पूछा. उससे वही पूछा जो उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया, और वही क्रॉस क्वेश्चनिंग करी. So यहाँ पे इसलिए there is no point. Just focus on whatever I'm going to tell you tomorrow. Just that, and thereafter all the cross questions you should be preparing the way. So many of them I will be telling you, and so many you should yourself realize कि अगर ये बोलेगा तो ये बोलेंगे, ये पूछेगा ये बताएंगे, ऐसे करके. Now, one of the questions will come as a favorite subject. So अभी जो मैं बता रहा था कि जो भी favorite subject आप बोलना चाहोगे during the course of interview, उसको prepare कर लो. Minimum of 2 chapters you should prepare. I mean very well. There will be some interviewing officers who may not be knowing that subject, but उस subject के जो related some common sense questions जो हैं वो तो आते ही हम सबको. ठीक है, तो हम फिर common sense question में चले जाएंगे. So therefore you should also be prepared with some common sense question too. Okay. Now, just before the interview, what is happening? Now you will be given a time, so therefore report to the waiting room about 30 to 45 minutes before. Now this is applicable across the board, not only at SSB, everywhere. When you are sitting in the waiting room, there will be some information board and some information displayed. So instead of going and sleeping off and dozing off out there, spend some time on those information which have been provided on the notice board. At least go through the headings, and one odd information go in a little detail. Besides that, there will be some newspapers and magazines kept, so revise your current affairs, current whatever you have prepared, you can revise them also. And also try to remember your PIQ form, whatever you have mentioned out there. It should not happen something like candidates के साथ क्या होता है कि PIQ form में mention करा है 2 games और interview के वक्त में you are talking about 4 games. Okay, and or vice versa. if वहाँ 4 game लिखे हैं लेकिन बता रहे हो 2 game. Understand this, that before you enter the interview room, we get a copy of the PIQ form and we prepare for you for your interview. The PIQ form is the first impression which we are creating in our mind. ये बच्चा आया, सब कुछ इसने किया है तो बहुत अच्छा है, और या इस बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं है, कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो अभी जो है इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसने अपनी तैयारी करी है. Let's see. So this PIQ form is very very important in that sense also. The first impression is this PIQ form. Therefore you must revise it and say things, whatever you mention as part of your family or education or sports or extracurricular activities, hobbies, whatever you have mentioned there, that only you are supposed to say it. Do not data में गलती नहीं करना है. Now when your number comes, so on the LED screen your chest number will be shown. So then is the time to move from the waiting room to the interview room. Now be it any test, so most of us what happens that अभी तुम्हारा number आ गया, so your pulse rate will raise up. Okay, it's a natural process. So pulse rate will raise up, and therefore as you walk from the waiting room to the interview room, start taking long deep breaths to calm it down. Okay, नहीं तो वो हफ्ते अपने आंसर को नहीं बोलना in front of the interviewing officer, and to show that you are not so confident और थोड़ा सा shaky हो रहे हो. So that is the essence of it. So cool down your pulse rate. Now having seen all of this, I will now tell you what are the different parts of the SSB interview. So I will just take the names, and tomorrow each part will be discussed in detail. First is your small talk or rapport building. Second is the opening remark. Third is the comprehensive information questionnaire, or in short called CIQ1, which is related to education and associated aspects. Fourth is
CIQ2, which is related to your family and associated aspects. Next is CIQ3, which is related to your spare time activities and related aspects. Next is questions related to general awareness. Then comes your self-assessment, that what are the positives in you and the areas you wish to improve upon. इसके बाद your motivation level to join the armed forces and the particular service which you want to join, उसके बारे में questions. Next, you will be asked that question that you have been asked so many questions. Is there anything else which you would like to ask or tell or clarify which has not been discussed during the course of the interview? And thereafter it is the end. So these are the various parts of the interview which will be asked to you, and then it's like that. Okay. Now, also let me tell you that once you reach the interview room, then firstly I will tell you that there are three personalities who may interview you. Either it may be the president of the board, who is of the rank of brigadier or major general. Second, it may be the deputy president of the board, who is of the rank of colonel. Or there are certain additional interviewing officers posted to the SSB. He may be of the rank of brigadier or colonel. So either of these three people will be interviewing you. Okay. Now, when you reach the door of the interview room, you're supposed to knock and say, "May I come in, sir?" Now, that knock should be loud enough to be heard by the interviewing officer, but not break the door like that. Your "May I come in, sir" should also be loud enough, not be shouting, but just loud enough because he is approximately at a distance of 14 feet from the door. Once you enter, then you, depending on the time of the day, you wish the assessor good morning, good afternoon, good evening, whatever. And then you start walking smartly towards the table where he's sitting. Now, post-COVID, so many assessors are not shaking hands, but now some of them have started. So if the assessor is extending his arm, that means he is wanting to shake hands with you. So walk up smartly to his desk and shake hands firmly, not a two-finger shake, or not a type where you are trying to shake out his arm from his arm socket. Okay, so like that. After that, either he will say it or through his eyes, he will indicate to you to move towards your chair. And then after saying thank you, then sit on the chair. Now understand this, that on the chair, there are three lines: the front edge, the center line, and the rear edge. So as far as I'm concerned, you should sit at the rear end of the chair and ensure that your backrest is resting against, your backbone is resting against the backrest of the chair. And there's a right angle turn at your hips, a right angle turn at your knees, and your feet, the foot is flat on the ground. Neither your toe is raised, nor your heel is raised. Your two arms should be flat, placed on your knees, or you can cross your fingers like this and keep them on your lap. Do not fold your hands like this. This is a sign that you are not opening up. Few more body language things which I'll tell you is that this eye-to-eye contact should be maintained throughout the interview. If some of you have eyes which starts watering while doing this, then focus here at the bridge between the two eyes on top of the nose. Number one. Number two, whenever you are not able to remember a thing, do not start looking down or here, there, anywhere, or even moving your eyelids left or right. Okay, so this thing I'll be highlighting again, why you should not be doing it, because your eyes conveys so many things. Just as you have seen in the Indian movies also, there's so much talking takes place between the actor and actress without saying a word. So similarly, this non-verbal communication through eyes is, you have to control it. Otherwise, you will give away, especially when you are not saying the correct thing and you know that you are not saying the correct thing. Second is the hand movement. A little bit of hand movement while speaking is okay, but too much of it is a distraction. Third is your shaking of your legs. Just if you are holding with your palms, holding your knees down, then you will be able to avoid it absolutely. But whenever you are a little underconfident or getting tense, then your legs will start shaking and you have to control it. Okay. So understand this, that you are sitting at a distance of 12 feet and the assessor is behind the desk. So you are seeing just this upper part of his body, but you are right in the open and he can watch you from head to toe. So therefore, you must be absolutely wary of that every body action of yours is being noticed. So this information which I'm providing you will stand you in good stead to deal with this aspect of the body language. Okay, ladies and gentlemen, I have finished with my part. Now, any questions whatsoever, please ask. Yes. Okay, one by one, we क्या हो गया? अतुल बोलो. Yeah, Mehak. Okay, so ask your questions. Yes, sir. So during the interview, if the interviewer asks us about the defense forces and all, so वैसे तो हम prepare करेंगे, but if we do not know about that time with forces के बारे में, defense के बारे में, so in short मतलब कितना जानने की जरूरत है? See, so if you are wanting to join which service? The first preference is to Air Force. Air Force. Now you should know the basics of the Air Force. Obviously, if you are joining the Air Force, it will be taken that you are wanting to join the flying branch. So you should be ready first. The very first question is, what creates lift? What creates lift? Simple. Knowledge clear होनी चाहिए. Next is about what are the various kind of aircraft which are there in the Indian Air Force. Number 3 is which particular aircraft would you like to fly? Transport, fighter, this and that. So what all aircrafts are there in the Indian military? So ऐसे करके so many questions can be asked. So everything is there, so much of this visible. As much as you can prepare, fine. Dipanshu. Sir, during the interview session, we are facing rapid fire questions. So what would you like to say? कल बताऊंगा पूरा. ये CIQ1, CIQ2, CIQ3. These are the rapid fire questions. ठीक है. Okay, sir. Okay. Ayushi Kumari. Yes, sir. So you said at the end we would be given a free chance to ask question to interview. So, sir, I mean, what sort of question can we ask? मैंने बता दिया ना, something which has not been discussed. Basically, अभी सब कुछ तो बहुत सारा डिस्कस हो गया. Now, it would be don't ask some silly question. If there's something which you have done in your life for which you were awarded or appreciated,
at some level, but which was not forming part of the PIQ form. Okay, so perhaps it may have not been discussed. So that point you can highlight it here. Okay, sir. Vinu, Yes, sir, I am having my SSB on 23rd of December, and I would say that I don't have a strong hold on general knowledge, and it cannot be built overnight. So, sir, if interview officer asks me something like that I don't know, and I say sorry, sir, I don't know. okay. ऐसे नहीं चलेगा कि I don't know. मतलब that means you are not reading the newspaper also, you are not watching the TV news also, and you are not having a smartphone. Are you having a smartphone? No, sir, but I use my mother's mobile. जो भी है, तो उसके अंदर जो है आप इधर-उधर की सोशल मीडिया देखने की जगह जो है, why are you not seeing some YouTube podcast or something like that? There's such all the news are there, one page is there, first post is there, like that. So everything will be updated. So at least know about what is Israel war. You know the topics now. Israel war हुई, अभी ये state elections हुए, Ukraine war चली आ रही है, COVID हो चुका है, ठीक है? And then the Supreme Court ruling on Article 370. These are the few topics which you prepare. Now the way I ask questions is that okay, what are you aware of? I ask the candidate, so I am giving the freedom to the candidate to tell me that what all he knows, which all topic he is prepared, he or she is prepared. ठीक है? So if that be so, just take it that others would also be like that. कि they will tell you okay बताओ कौन सा टॉपिक है. आप तुम बोलोगे सर I don't know any topic, तब तो फिर आप मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हो. You are just not interested. आप बस बिस्तर से उठ के चले आए, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है? So therefore take part. So prepare now. Also so much time is available. Just devote half an hour, 1 hour to each and just go into a little detail of it. ठीक है? सब कुछ गूगल सर्च में सब कुछ दिया हुआ है. Gist of it is also is there. Okay, Ayushi. Okay, sir. Okay, thank you, sir. ये आपका हो गया. Prince Raj. Sir, actually, I studied online in my 12th, and also currently I am doing graduation from a distance college. So would it be against me? No. As long as you are able to answer our questions, the basic आपका जो कहना चाहिए, you should be clear of what you have learned in life. That is what you are interested in. जो आपने पढ़ा है, आप बोलो मैंने ये पढ़ा है लेकिन उसको समझा नहीं पा रहे हो, ये पता नहीं है उसके बारे में कुछ. You are drawing a blank, then we will have a question mark on you. Okay, sir, thank you. Whether you have done open university or closed university doesn't matter. Shivang. Yes, sir, Jain sir. So my question was that if we have taken drop after 12th, is this will create a negative impact? Or? आप everybody ये कहाँ से शुरू हो गया? Yeah. So everybody please see my one YouTube में जो है एक डिफेंस लॉयर करके मेरा इंटरव्यू है. Okay. This question I have answered very nicely up there. So basic what I want to tell you is that it does not matter until that particular year you have used it in a very nice manner. Okay. It should not happen कि आपने ड्रॉप लिया तो improve your percentage 60% आए थे, you wanted to improve it to 80%, but आपने जो improvement हुआ वो सिर्फ 62% हुआ. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है? So it should be very clear that you have made use of that 1 year. Okay, last question, Raghav. Yeah, पूछो. Sir, if the interviewer asks us a personal question of family, basically your family, it is a real person. पूछेंगे बाबा, पूछेंगे. कल मैं बताऊंगा ना, कल बताऊंगा सब कुछ क्या पूछेंगे. पूछेंगे आपको सब कुछ पूछेंगे. It's all about you. So I have to ask, how much do we have to speak? बेटा मैं कल बताऊंगा ना. Okay. ये तो कल बताऊंगा. और कल का क्लास क्या है? कल के मैं यही बताऊंगा. Thank you, sir. Okay, thank you and good night. I hope all of you have understood whatever I taught you today. If in case there are any doubts still lingering in your mind, note them down before tomorrow's class. I will be asking you of the same. Okay, thank you and good night. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Jain sir, Jain. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Sir. क्या? हाँ बोलो. Sir, I want to ask you a question, sir. And related to your personal life, sir. Personal line हाँ बताओ. But, sir, were you an interviewing officer or GT officer, sir? इंटरव्यू का बताया तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर. I'm sorry, I was not there at that moment. So I asked you this time. I was interviewing officer for 5.5 years, and since I was 5.5 years, so I got so much of input from the GT and the psychology also, and my personal learnings. So that's why I'm able to talk in those two subjects also. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Okay. Himanshu? Himanshu, are you there?